Last lecture we will discuss how to prepare journal. Today we will continue chapter journal. Some more transactions are there. First we make the format of journal. First there is date, then particulars, then laser folio, amount and amount. First is amount debit, second is amount credit. Now we will take the some more transaction, how to record it. First we start purchase goods for cash. We have purchased the goods. Always remember, if we purchase or sales of goods, then purchase or sale word is used for that. So what will be the entry? Date. You can take any date. Purchases account debited to cash account. Then there will be a narration, description of the transaction. You will write purchase goods for cash. Being purchased goods for cash, amounting rupees, you can say 20,000. I have earlier discussed that rules which we follow. There are three types of accounts: real account, personal account and nominal account. The second one, purchase goods from Hari of rupees 30,000. Now what is the difference in both of it? There is word cash and there is a name. आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, अगर वो आप उसको कैश पेमेंट करते हैं तो देयर इज नो नीड टू आस्क व्हाट्स योर नेम टू मेक द बिल. अदरवाइज इफ यू परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, इफ नेम इज देयर, इट्स मीन ट्रांजैक्शंस ऑन क्रेडिट. इट्स मीन हमने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, हरी बिकम्स आवर क्रेडिटर्स. Now who are creditors? Those person from the business purchase the goods on credit. It's a liability. It's a liability, or liabilities always be credit. Now what will be the answer? Purchase here, it's expense for us. Purchases are as a nominal account, and creditors name Hari is our personal account. Then what will be the entry? Purchases account debited to Hari, rupees 30,000 and rupees 30,000. Again we will write the narration: purchase goods on credit. Being purchase goods on credit. One more example: purchased goods from Ram for cash rupees 50,000. Both name is also given and word cash is also given. It's mean आप किसी शॉपकीपर शॉप पे जाते हो, अगर वो आपको जानता है पर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो you first preference to cash. Then there is no need to record the name. It is treated as cash transaction, not a credit transaction. So what will be the entry? Purchases account debited to cash accounts. Being goods purchased for cash. It's rupees 50,000 and rupees 50,000. First
entry will be recorded at the time of cash purchases, that for credit purchases, that name or cash both are given, so we will do preference according to the cash purchases count debit to cash account. The next one, sold goods to hire, rupees 12,000. Now there is also name. Always remember there is word goods, so we will word use sale or purchase. Now what will be the entry? What is the name? Sold goods to Hari. Hari debited to sales account. Goods sold to Hari of rupees 12,000. Now we will continue. Now we are doing without format, try to understand, it takes more space. Fifth one, goods returned by Hari of rupees 2,000. Sometimes customer does not like the goods, he or she can return the goods. We have sold the goods to Hari rupees 12,000, but he makes return of rupees 2,000. So what will be the treatment? First we have done Hari debited to sales account of rupees 12,000 and rupees 12,000. Now goods are returned by Hari, so it will be the reverse entry. You will write here sales return. Hari को हमने डेबिट किया है. Hari has become our debtor. Now who are debtors? Debtors are those persons to whom the business sells the goods on credit. There are two words, debtors and creditors. Debtors ये अपने देनदार हैं जिन्होंने बिजनेस के पैसे देने हैं. क्रेडिटर्स आर ये लेनदार हैं जिन्होंने बिजनेस से पैसे लेने हैं. डेटर्स को हमने माल क्रेडिट पे बेचा है, इनसे हमने क्रेडिट पे खरीदा है. नाउ दे आर रिटर्निंग द गुड्स, इट्स मीन इट्स reduce our debtors, so it will be opposite. Sales return account debited to Hari rupees 2,000 and rupees 2,000. Its another name is returns inwards account. And purchase return is outwards. Returns outward. Purchase return is return outwards. Sale return is return inwards. Now take some more example. If we are particularly selling or purchasing a particular asset, to what will be the entry? Sold furniture for rupees 25,000. Now there is name of particular asset. At that time we will use the asset name. Know the word sales or purchase. We are selling the furniture. तो according to business, फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है. सॉरी, सेल कर रहे हैं. फर्नीचर इज गोइंग टू आउटसाइड. फर्नीचर बाहर जा रहा है, हम बेच रहे हैं. और कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है. तो व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. कैश इज ए रियल अकाउंट, बिजनेस में आ रहा है. तो व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. Same for purchased machinery for rupees 40,000. अब हमने मशीनरी परचेज की है, तो we will use the machinery word, not the purchase. Machinery account debited to cash
account ₹40,000. This is all about some transaction. Now do the next step. The word discount. डिस्काउंट में हम किसी को छूट देते हैं. This is divided into two parts. There is a word trade discount and cash discount. Now what is trade discount? It is given by seller to purchaser when he purchases the goods in large quantity. जब एक पर्सन लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है, मैन्युफैक्चरर और सेलर के द्वारा एक डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड इट इज नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट लेस करके हम वो अमाउंट को बुक्स में शो करते हैं. नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट? इट इज गिवन बाय सेलर टू एनकरेज द कस्टमर टू टेक अर्ली पेमेंट. अगर हम किसी से कैश जल्दी लेना चाहते हैं तो उसको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए हम उसको क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट. इट इज शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर हम किसी को कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो वी विल यूज वर्ड डिस्काउंट अलाउड. इट इज एक्सपेंस फॉर अस. It will be debt. It is a nominal in nature. If we are receiving the discount, to use the word discount received. It is income for us. It will be credit. इसको credit करते हैं. Now take an example to understand it better. Take example of purchase. Business purchased goods from Rohit for rupees 50,000. Here, trade discount is given by him. You can say 10%, and cash discount is 2%. If you make the payments within 10 days. हमने गुड्स परचेज की है रोहित से ₹50,000 ने बिजनेस से परचेज की है. ट्रेड डिस्काउंट 10% है. कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर हम विदिन 10 डेज उसको पेमेंट करते हैं. तो फर्स्ट यू कैन से हम गुड्स परचेज की है अप्रैल 10 को एंड वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अप्रैल 50. Clear? First we will do the purchase entry. Purchasing account debited to Rohit. कितने की गुड्स परचेज की है? 50,000 की. ट्रेड डिस्काउंट है 10%. 50,000 10% मीन 5,000. Remaining 45,000. 45,000 will be taken in the books of account after deducting the trade discount. 45,000 and 45,000 being goods purchased on credit. Now we are making payment within 10 days. Before 10 days, so we will receive the 2% कैश डिस्काउंट. परचेजिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम पेमेंट करेंगे. पेमेंट करेंगे तो कम करेंगे तो डिस्काउंट
रिसीव होगा, व्हाट विल बी द एंट्री? रोहित को कितने देने? 45,000, तो उसको कैंसिल 45,000 से, उसकी सेटलमेंट कितने से हो रही है? अब 45,000 का 2% इज इक्वल टू 900, तो 900 हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। कैश कितना जा रहा है अपना, और हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है? टू कैश डिस्काउंट रिसीव हमें हो रहा है 900, और रिमेनिंग हम कैश पेमेंट कर रहे हैं 44,100। This is all about the how to show the trade discount. Always deducted from the amount of purchase. That 45,000 will be taken in the books of account. At the payment, we are receiving discount. It's income for us. It will be the credit to cash 44,100. और रोहित को हम कैसे कितने से कर देंगे? 45,000 से. Same in case of sales. Sold goods to Deepak of rupees 1 lakh. Trade discount you can see 20%. Cash discount is rupees 5%. If we he make the payment us within 7 days. Sold goods to people May 1st, he is making payment on May 4th, so within time he is making the payment. Now first entry, sold goods Deepak debited to sales account. Now goods sold rupees 1 lakh, 20% trade discount, it will be deducted 20,000. We take 80,000 in books of account, rupees 80,000, and rupees 80,000 being goods sold to Deepak. Now Deepak within time हमें पेमेंट कर रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे. डिस्काउंट अलाउज इज एक्सपेंस फॉर अस, इट विल बी डेबिटेड. हाँ जी, व्हाट विल बी द एंट्री? कैश हमारे पास आएगा. डिस्काउंट अलाउ करेंगे, it is expense for us, we can say loss, it will be debited to Deepak. हाँ जी, दीपक से कितना लेना था? 80,000. 80,000 का 5% हमें कितना डिस्काउंट दिया उसको? 4,000, और हमारे पास पैसा कितना आ रहा है? 76,000. These are the trade discount and cash discount. Goodbye.